I am a research scholar in sociology in Utkal University and also a guest lecturer in sociology in BJP Autonomous College. So today we will discuss your last unit, that is process of globalization, industrialization. So before starting globalization, I will discuss about the process of social change. Dear students, I have talked to you before that within a society, within a sociology, there are two important concepts. One is the social static, another one is the social dynamic. Static is the concept that means it refers to, it is the phenomena which holds the society all together. It is the constant and the static part of the society that holds the all units of the society all together, that binds the society into a single unified fact. At the same time, social dynamism is the aspect that change, that can be changed through the process of social change. Social dynamism is one of the important aspect of the society. So, and these two concept was given by Auguste Comte, the father of sociology. So, social static is the phenomena that holds the society all together, that is the responsible factor through which a society is united. At the same time, social dynamic is the aspect that change according to the process of change. So, nothing remains static, everything is dynamic, because social dynamic is one of the important aspect of the society. Everything changes through the process of social change. So, nothing remains static because change is the law of nature. आम समस्ते जाने गोटे जिन केवल कन्स्टाट लाइफ से हूँ वर्ड सोशल चेंज एज ए वर्ड दैट इज द ओनली कन्स्टाट फेनोमेना आकु छाड़ी बाकी सब जिन होती चेंजेबल एवरीथिंग चेंजेस नथिंग रिमेन्स द सेम गत काली आम क्लास करूँ आज आम क्लास करूँ काली और आज भितर बहुत फरक अच्छी सो एवरीथिंग चेंज कौन से जिनसर केबे भी स्थायित्व बोली न था सब जिनिस चेंज हुए कारण एटा ही हूँ तुम लॉ ऑफ नेचर प्रकृतिर गोटे नियम तुम सीजन चेंज हुए डेट चेंज हो डे चेंज हो फेस्टिवल चेंज होती आमे समस्ते चेंज हो गोटे कौन सी इवन गोटे नदी में जो पानी भी बहिकी जाऊँगी जो पानी थे बहिकी जाए से पानी के आउ फेरिकी आसेनी सो everything is a dynamic aspect. That means everything change, nothing remains the same because this is the only truth and this is the law of nature. But there are several, whenever we are dealing with a social change, that means it is the changing of the social structure, because social structure is the integrated phenomena through it is a static phenomena. At the same time, it also change, it also faces certain kind of changes. So social change is all about the changes of the social phenomena, and there are a lot many factors are responsible for the social change, like industrialization, modernization, and globalization. All those factors are responsible for the change. So if you imagine the society before 50 years or 100 years is not the same way the society is today. So 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्व जो सोसाइटी थिला आबे जदि सेही सोसाइटी आ वर्तमान का सोसाइटी को कंपेयर करबा ताले बहुत प्रकार चेंजेस आसी जाईची इवन जदि हमें आज का सोसाइटी को देखिबा आ 10 वर्ष परे आ गोटे सोसाइटी को देखिबा जदि सेही सेम सोसाइटी को हमें ऑब्जर्व करबा देन ए लॉट ऑफ चेंजेस यू कैन नोटिस जदि हमें इंडियन सोसाइटी को देखिबा हम पर्टिकुलर ओडिसा को भी जदि हमें देखिबा 10 वर्ष पर इवन गत काली रो जो सिचुएशन थिला सी भी आज के भी समान है कि नहीं कारण दिस इज द ट्रूथ दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एवरीथिंग चेंजेस सब जिनिसटा चेंज हुए बट आवर सोशल स्टैटिक पार्ट that also change but it takes a lot of time to change, like for example our ideology, our mindset, our belief system सब जिनसटा सपोज आज तुमको गोटे तुम ड्रेस टे भल लागुनी तुम संगे संगे तो चेंज कर दे पारो गोटे नुआ ड्रेस किनि आनी पारो so these are the dynamic aspect of your society that can be changed faster, but at the same time it is your mindset, it is your emotion, it is your values, it is your faith and belief system that takes a lot of time to change with the changing scenario. So these two aspects of the society are one of the most important in sociology. One is the social static and social dynamic. Social static is the constant phenomena that binds the society all together. जोटा पाई कि हमें समझते इंटरकनेक्ट होकर रही गोटे प्रोसेस रे सोसाइटी हमर कंटिन्यू करूची. At the same time, social dynamic is also important part of the society that change faster. सब जिनसटा चेंज हुए आउ फैक्टर्स मान को भीतर कहली मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, industrialization, globalization, these are the various factors that is responsible for the process of social change. So
Today we will discuss about globalization. Globalization तार ओडिया मीनिंग है जगतीकरण. Globalization आम डिस्कस करबा how globalization is an important phenomena within a social change. How globalization is an important factor of social change. केमिति globalization through रे तमरो सब जिनिसटा चेंज होची. So today we will discuss about globalization, its meaning, its characteristic, and the impact of globalization. Globalization is a process. Globalization is an ideology. What is the meaning of it? What is the characteristic of it? And what is the impact of it? Next slide. So dear students, you can see the picture here. गोटे पृथ्वी रे गोटे ग्लोब आम देखुचे से ग्लोब रे देखिबो गोटे गोटे रेखार समस्त कनेक्ट हेक रहिछथि. So this is the meaning of globalization. So globalization simply means the interconnectedness. जदि हम गोटे सिंपल कांसेप्ट को देखिबा जदियो ग्लोबलाइजेशन रो ओरिजिन होची इकोनॉमिक गोटे इकोनॉमिक एस्पेक्ट रो गोटे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रो तार ओरिजिन हेतला अर्थनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू रो बट ग्लोबलाइजेशन इज मोर सोशल देन इकोनॉमी एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी as a academician in sociology we have to discuss globalization from a social point of view not from an economic point of view though economy political all those things are the part of the society but as a concept it has origin from economic point of view gote economic point of view globalization origin heithile madhya it is more social in nature the dimensions of globalization the impact of globalization is more social in nature and as a sociology we will discuss the process of globalization from a social point of view from a sociological point of view. So you can see the picture itself is defining that the process of globalization is an interconnected phenomena. It is the meaning that symbolizes that globalization is the interconnectedness. It is all about interconnecting all the parts into a united one. सब जिनस को आनिक आम गोटे कहे ग्लोबलाइजेशन एंटायर ग्लोब ग्लोबलाइजेशन आसी ग्लोब रु तुम ग्लोब टाक जो एंटायर ग्लोब मैंने बुझीपार समस्त पृथ्वी ए पृथ्वीटा को जो आम इंटरकनेक्ट करूँ गोटे प्रोसेस थ्रो आम से कहूँ ग्लोबलाइजेशन. सो इट इज द प्रोसेस व्हिच यूनाइट द एंटायर ग्लोब व्हिच यूनाइट द एंटायर वर्ल्ड. So this is the process of globalization. So if we take a social meaning of the globalization, sociological meaning of the globalization, simply we can say that globalization is all about social interconnectedness. It is all about interconnecting all the parts of this globe into a single unified structure. So this is the process of globalization through which interconnectedness of the globe is possible, interconnectedness of the people of the world is possible. So this picture is defining that globalization is the interconnectedness. Its meaning is all about the interconnectedness. Next slide. So the first point of globalization saying that globalization is a social process. जदियो तार इकोनॉमिक तार ओरिजिन मु कहूची बट it is more social in nature and as a sociology as a student of sociology we have to discuss it from a sociological point of view. Globalization is a social process that has resulted in greater interconnectedness and integration of people and nations across the border. सब नेशन रो गोटे गोटे बॉर्डर अच्छी बट सेही बॉर्डर को क्रॉस करके जतबेला हम गोटे गोटे कंट्री मन को सब इंटरकनेक्ट करू जो प्रोसेस थ्रोडे सेही प्रोसेस को हम कहू ग्लोबलाइजेशन. इट इज द प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन दैट हैज रिजल्टेड ए ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द नेशन. तो गोटे नेशन रो आ गोटे नेशन जो लोक मान सब आम विभिन्न प्रकार नेशंस अच्छा गोटे ग्लोब रे गोटे पृथ्वी रे तुम यूएसए हो जाओ यूरोपियन कंट्रीज जातु इंडिया हो श्रीलंका हो विभिन्न प्रकार कंट्रीज अच्छा बट अक्रॉस बॉर्डर अक्रॉस द ग्लोब थ्रू आउट द ग्लोब जो गोटे प्रोसेस थ्रू आम समस्त सहित इंटरकनेक्ट हो सही प्रोसेस को आम कहूँ ग्लोबलाइजेशन. So globalization that has resulted a greater interconnectedness at the same time a greater integration of the people across the national borders. So this process is all about the globalization. The process has steered the greater movement of individuals, ideas, knowledge, capital, goods across the national border. ମୁଁ तुमको बारंबार आगରୁ भी कहिछि we as an individual we are less biological, we are more social in nature. To quote the father of modern political science Aristotle, human beings are the social animal. We are more social in animal. We are more social in nature. So whenever we are moving, I mean जतबेले भी moving करूचे, not our biological body is moving. At the same time, the social aspect of our body, the social aspect of us is also moving.
whenever we are moving, our ideas are moving, our cultures are moving. So ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ସେ ଏକାକି ଯାଉନି, ତା ସହିତ ତାର କଲଚର ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ତାର social aspect ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି। So ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ globalization is all about the movement of people throughout the globe। ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କହୁଛୁ କଣ, इंटरकनेक्टेडनेस, या प्रोसेस थ्रोडे समस्त मूव करूछंती गोटे नेशन रो आउट नेशन को इजी प्रोसेस रे जाई परछंती। तो व्हेनेवर पीपल आर मूविंग अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द थ्रू आउट द ग्लोब, दैट मीन्स their cultures are moving, their social aspects are moving। So that's why the process is steered the greater movement of the individual। So this process itself is steering that all the peoples are moving, and at the same time their ideas also moving, their knowledge also moving, the capital and goods across the national border। So सबु प्रकार जिनिस हमर द्रव्य ठु नै कि हमर आइडियोलॉजी, हमर माइंडसेट, हमर सबु जिनिस मूव करूची गोटे सेंटर आ गोटे जगह को इजी प्रोसेस रे। गोटे कथा तमे मन रखथिबो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कोन को, इट इज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज़ वी हैव कलेक्टेड द आइडियाज फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशन, other national constitution, and all those things have incorporated into our Indian constitution। हमें समझते कहू केमिति पॉसिबल हला सेटा, only because of the process of globalization। हमें बाहर को गलु, हमें जानिलु, ता परे जे किसी जिंसटा को आनी के हमें जे अप्लाई कलु। तमे आज तम घरे विभिन्न प्रकार तमे गोटे जिंस मने पकाउ पिला माने, तमे छोटो बेलु तमे सकाळ सोई कि उठिबारु राती सोइबा पर्यंत तमे यूज करूथबा केतेटा जिंस तमर इंडियन, प्राय तो मैक्सिमम जिनस तुम देखिबो आमे वेस्टर्न सोसाइटी आनिचो, आमे इंडिया बाहर आसबा, तुम यूज करूथबा फोन, तुम यूज करूथबा इयरफोन टू नेकी तुम ड्रेस, ए सब जिनस जदि तुम कोनसी गैजेट भी यूज करूचो देखिबो इंडियन भी थाई परे, इंडियन सहित तुम बहुत प्रकार जिनस बाहर जिनस सब यूज करूचो। इवन तुम फूड खाउचो, सब प्रोसेस रे केमिति होची, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच पीपल आर मूविंग, आइडियाज आर मूविंग, our goods are moving, knowledges are moving, and all the technology, all those things are moving across the globe, throughout the globe। This process itself is defining the process of globalization। It is a process of interaction and integration among the people, companies, government of different nations। आज तुम मार्केट रे देखिबो विभिन्न विभिन्न प्रकार गाड़ी, तुम Hyundai ठु नेक, टोयोटा ठु नेक, ए सब कोन इंडियन कंपनी रे गाड़ी केबे भी नुहे। तुमरो विभिन्न प्रकार नेशन रो गाड़ी आज तुम यूज करछो, केमिति पॉसिबल हला? Only because of the process of globalization it is possible। It is a process driven by international trade and investment, and aided by information and technology। So this process of globalization is driven by the international trade and investment, and aided by information and technology। आज यूक्रेन और रशिया भितर तुम चली वार चलची, बट आम घरे बसी बसी प्रत्येकटा मूवमेंट रे तार न्यूज पाउछु। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज इंटरकनेक्टिंग द ग्लोब। गोटे एंटायर ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आम संगे संगे फोन ऑन कला माने हम पाखरे आसी न्यूज पहुंची जाउची, केमिति ना ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोब, ओनली बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम तमर इंटरनेशनल ट्रेड आज बहुत प्रकार तुम जदि आज फॉरेन जिनिस गुडा यूज करि परछ, केमिति पॉसिबल होची? ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सो इट इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ interconnectedness। It is all about the integration of people, ideas, knowledge, and all those things, and also the nations through the process of globalization it is possible। It is the interconnectedness of the individual, population, and nations across the globe and throughout the globe। Next slide। According to sociologists, it is an ongoing process that involves interconnectedness, changes in the economic, cultural, social, political spheres of the society। So important spheres आम जदि देखिबा, there are three important spheres of the society: social, economical, and political। If we critically observe the process of globalization, it has affected all the political spheres। किछि समय पूर्व में एग्जांपल नौथिल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ वी हैव बोरोड द आइडियोलॉजी फ्रॉम different constitutions of the different countries and incorporated into our constitution। So politically जदि हमें देखिबा, globalization has impacted political sphere। आज यूएस रे तमरो प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो, तमे इंडिया रे हमर पॉलिटिक्स ता अफेक्ट हबो। आज रशिया चाइना रे तमरो इलेक्शन हबो, हमर इंडियन पॉलिटिक्स ऊपर अफेक्ट पड़िबो। काहे कि ना ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस वी आर politically interdependent। At the same time
तमे कल्चरल कल्चर माने हमर प्रत्येकटा मूवमेंट आज हमर वेस्टर्न कल्चर आसी के हम पहुंची सलानी एट द सेम टाइम तमे जदी जर्मनी भला कंट्री को जीव तमे जदी विभिन्न प्रकार जर्मनी रे प्राय जदी जर्मनी भला कंट्री को जीव तमे देखिबो इंडियन एथनिक ड्रेस माने पिंदुचंती हमर हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस को तांको बॉडी रे माने टैटू करचंती केमिति पॉसिबल हमर आइडियोलॉजी को माने केमिति जानिले ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन देन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कल्चरल एवरी स्पेयर सब स्पेयर रे तमर ए प्रोसेस ए ग्लोबलाइजेशन सब स्पेयर रे तमर पहुंची या को ही कहू छ हमें जगतीकरण दैट मींस गोटे जिनिसट को पूरा वर्ल्ड वाइड अक्रॉस ताको हमें पहुंचेबाट को हमें कहू छ जगतीकरण जोटा कि हमें ग्लोबलाइजेशन बोली कहू छ एज अ प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स द एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस एस्पेक्ट्स बिटवीन नेशंस regions communities and even seemingly isolated places तमे देखिबो सब प्रोसेस रे हमर जिंस गुडा को पहुंची आज देखो हम ओडिसा रो आरिसा पिठा ओडिसा रो हमर मुढी ये जाय कि आज वेस्टर्न सोसाइटी इवन अमेरिका रे गोटे जर्नल रे बाहरी तिला मुढी विषय रे तमे जदी जानिबो जदी भल भाब रे देखिबो केमिति एटा पॉसिबल होची ओनली बिकॉज़ ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल वी आर इंटरकनेक्टेड वी आर यूनाइटेड अक्रॉस द ग्लोब हमर समस्त हमें ग्लोब थ्रू रे हमें आज कटक रो बाली यात्रा कथा देखिबा से वेस्टर्न सोसाइटी रे भी कटक रो बाली यात्रा बहुत फेमस आज वेस्टर्न सोसाइटी रे प्राय तो 126 और 27 कंट्रीज रे तमरो रथ यात्रा सेलिब्रेट होची हाउ इट इज पॉसिबल दिस इज बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन cultural ideology have transmitted into across the globe in terms of the economy globalization ame tike ebe specifically देखबा economic point of view यार meaning कोन social point of view यार meaning कोन in terms of the economy globalization refers to the expansion of capitalism to include all places around the world into a globally interconnected economic system capitalism as a system कोन it is very much profit oriented business oriented जो कि तमरा नेशन स्टेट रो बा गवर्नमेंट रो इंटरफेरेंस कम रहे बिजनेस सेक्टर को पूरा ऑटोनॉमी दिया जाए समय जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत पॉसिबल हो इफ वी टेक द इकोनॉमिक एस्पेक्ट देन spreading of the expansion of capitalism across the globe that is the process of globalization from an economic point of view if we take the cultural aspect it refers to the global spread and integration of ideas values norms behaviors and the way of life जदि हमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा ताले हमर जो लाइफस्टाइल ए जो लाइफस्टाइल हम जो कहउतली जर्मनी रे इंडियन ड्रेसेस बहुत पिनंती तमे जदि बाकी कंट्रीज गुडा रे भी देखिबा तमर बहुत प्रकार आज इस्कॉन देखो इस्कॉन थ्रू रे तमर जगन्नाथ कल्चर जे कि कृष्ण चेतना बा श्री कृष्ण कर चेतना ए जिनसटा वर्ल्ड वाइड पहुंची परची हाउ इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन कल्चरली आवर कल्चर हैज आवर कल्चर तांका हम कल्चर जे कि तांका पाखरे पहुंची परची हमें तांकर कल्चर टा आसी के हम पाखरे पहुंची परची दिस इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द नेशंस अक्रॉस द ग्लोब it is the cultural meaning of the from a cultural point of view this is the meaning of the globalization next slide politically it refers to the development of forms of governance that operate at a global scale which policies and rules cooperative nations are expected to avoid तमे देखो UN United Nations UNDP UNICEF World Bank IMF तमरा World Trade Organization these are the international organization that is not restricted to a particular country rather it is operating in a global scale in a global level it is operating the World Bank UNDP आज जदी ओडिसा गवर्नमेंट हमर ओडिसा गवर्नमेंट रे देखिबा एते सब ओवर ब्रिजेस होची एते प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होची हाउ इट इज पॉसिबल हमें कोना वर्ल्ड बैंक पाखरु आनी छु लोन आज जदी हमर यूनिवर्सिटी रे जदी हम उत्कल यूनिवर्सिटी को देखिबा उत्कल यूनिवर्सिटी काहे कि बहुत प्रकार यूनिवर्सिटी को देखिबा बहुत प्रकार वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट्स गुडा होची आज यूनिसेफ तमर पे वैक्सीनेशन प्रोसेस चलीतला यूनिसेफ हमको विभिन्न प्रकार वैक्सीनेशन पे विभिन्न प्रकार प्रोविजंस प्रोवाइड करची हाउ इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन because politically it refers to the development and forms of because today the international organizations are not restricted to a particular country ame as gote country bhitere operate ki rohunu a lot many international organizations are there they are operating across the globe tame the World Bank UNDP विभिन्न प्रकार organization even United Nations जोटा तमे मिलित जाति संघ बोली कहउछ तमाने केमिति पॉसिबल होचंती only because of the ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तमाने ग्लोबल स्केल रे तमर एंटायर ग्लोब को ऑपरेट करचंती आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO देखिबा एंटायर वर्ल्ड वाइड तमर सब जति कि भी हेल्थ अफेयर बा लोकंकर हेल्थ एस्पेक्ट रो कथा बुझिबा पे वर्ल्ड लेवल से ऑपरेट करूची सो पॉलिटिकली जदि हमें देखिबा इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोब that is the political from a political point of view this is the political meaning of the process of globalization these
are these three are the core aspect of globalization. এই তিনটা economic, cultural and political, these three are the core aspects of globalization, are fueled by technological development. The global how এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା possible କେମିତି ହେଉଛି ନା because of the technological development. as a technology ର development ହେଇଛି कोविड-19 एबे देख तुम कोविड-19 पैंडेमिक है लॉकडाउन हो गला स्कूल कॉलेजेस बंद हो गला बसिक आम ऑनलाइन रे क्लास कलु ऑनलाइन रे तुम देखो ऑनलाइन रे इंटरनेशनल सेमिनार्स गुडा है केमिति ना इंटरनेशनली लोक मैंने बसचंदी बट आम इंटरनेट थ्रू रे आम समस्त तांको सहित इंटरकनेक्ट करि परछु. सो एई जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन टाको आउट टिके बेटर हे गला काहे कि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट, दिस प्रोसेस इज फुएल्ड. इस प्रोसेस ता होरी बढ़ी गला, इट मल्टीपल हे गला ई प्रोसेस ता. And the global integration of communication technology and the global distribution of media. आज देखो international scale, आज देखो कोठी फ्लड है तुम देख ओडिशा रे जते बारंबार साइक्लोन आसे तुम इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल लेवल फंडिंग आसे केमिति बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मीडिया. ग्लोबल मीडिया हमर न्यूज को नेकी बाहर पहुंचुचंदी जोटा थ्रोडे हमको बहुत प्रकार फंडिंग को नेकी बहुत प्रकार चैरिटी बहुत प्रकार हमको सुविधा सुजोग सब मिलुची. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओनली बिकॉज ऑफ दिस इट इज पॉसिबल. सो globalization is a distinguishing trend. Globalization is a distinguishing trend and features of the modern society. As a term, it had its origin in the French and American writings in the 1960s. So, we have to terminology. Globalization is a term. You origin hitla tomorrow 1960s in French and American writings, but it came into popular usage in the 1980s. 1960 मसीह एज ए टर्मिनोलॉजी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बहुत पूर्वर अछि, बट एज ए टर्मिनोलॉजी ये बेसिकली तुमर 1960s रे डेवलप है माने अमेरिकन और फ्रेंच राइटिंग्स गुडा रे देखिया को मिलितला. बट एज ए प्रोसेस इट पॉपुलर हैला के 1980s परे परे ए कांसेप्ट ए प्रोसेस बहुत पॉपुलर हे गला. इट इज द नेक्स्ट स्लाइड. It is the process by which the people of the world are unified into a single society, that is the global society. I देखिबा कोन ना it is the only process. This globalization is the only process through which the people are unified into a single society, that is the global society. गोटे विश्व गाँ रे समस्त परिवर्तन हेचन, कारण जेमिति हमें गाँ भीतर देखिबा समस्त कोन हेचंती ना समस्त गोटे कनेक्ट हेकि रहिथांती, समस्त भीतर गोटे पर्सनल रिलेशनशिप समस्त समस्त विषय जानथांती. आमे त आज समस्त अक्रॉस द ग्लोब आज हमें सब जिनसटा जानिचु, एंटायर वर्ल्ड वाइड रो इन्फॉर्मेशन हम पाखे अछि. सेते पई हमें कहूछु गोटे विश्व समाज रे परिवर्तन हेछि, काहे कि ना ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट लीड्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी. आमे जदि अर्थनीतिर बा अर्थनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ग्लोबलाइजेशन को देखिबा, जगतीकरण को डिफाइन करे कोन होय जतबेला हमें गोटे देशर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सहित इंटरकनेक्ट करू, हमें ताकू कहू ग्लोबलाइजेशन. सो इट लीड्स टू द integration of national economies into the international economy through trade. केमिति हमें गोटे देशर इकोनॉमी टाकू इंटरनेशनल इकोनॉमी सहित रिलेट करिबा थ्रू द ट्रेड बिजनेस थ्रू रे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जोटा हमें एफडीआई बोली को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फ्लोज, माइग्रेशन माने लोक माने ते मूव करके आ गोटे जगह को जाई कि रहंती. पिला माने आज तमे माने निजे को गां भीतर समस्त आसी कि पिला माने पाठ पढुचंती, बाहर यूनिवर्सिटी रे पाठ पढुचंती, ताको में कहूछु माइग्रेशन, स्टूडेंट माइग्रेशन. तो सेमिति लोक माने विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पय सब बाहर को माइग्रेशन हिते, जतर में माइग्रेशन हे कि जाउछु हम सहित हमर आइडियोलॉजी हमर माइंडसेट सब जिनिसटा जाउची जोटा प्रोसेस रे कोन हमर इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ुची. Then thus the process of globalization is a single word describing multiplicity of phenomena. तमे देखो ग्लोबलाइजेशन होची गोटे सिंगल वर्ड बट इट डिस्क्राइबिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेनोमेना. यार गोटे वर्ड सत बट यार मीनिंग बहुत प्रकार डिफरेंट. वी हैव डिस्कस्ड globalization from a cultural point of view, we have discussed globalization from an economic point of view, at the same time we have discussed globalization from a social point of view. It is a single process. Globalization is a single phenomena, globalization is a single word, but it is describing the multiplicity of phenomena. It is multidimensional in nature. यार मीनिंग गुडा बहुत अधिक, ये बहुत गोटे जिनिस बट ये बहुत प्रकार मीनिंग को सिंबलाइज करे एक गोटे कांसेप्ट. Thus, globalization is a single word describing the multiplicity of phenomena. It is omnipresent, it is ubiquitous, it is multidimensional. ये गोटे वर्ड बट इट इज omnipresent, इट वाइड स्प्रेडेड. तुम एंटायर वर्ल्ड को देखो सब जगह को ग्लोबलाइजेशन वाइड स्प्रेड. यूबिक्यूटियस एटा सब जगह रे प्रेजेंट थाए, प्रेजेंट सब जगह रे सब सिचुएशन रे ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट थाए.
मल्टी डायमेंशनल माने गोटे वर्ड पर यार डायमेंशंस गुड़ा बहुत अधिक पॉलिटिकल डायमेंशंस अच्छी इकोनॉमिक डायमेंशंस अच्छी कल्चरल डायमेंशंस अच्छी ए सिंगल वर्ड by describing multiplicity of phenomena. To the sociologist, globalization is the development to uniform global institution expediting the process of the social change and leading to the emergence of a world society. ये कौन करुची ना ग्लोबल स्पीयर एंटायर ग्लोबल स्पीयर समस्त को इंटरकनेक्ट करुची एट द सेम टाइम एमर्जेंस ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी गोटे विश्व समाज रो सृष्टि करुची गोटे जिंस जदियो जदि हमें देखिबा हमर सनातन धर्म रे यार प्रथा बहुत पूर्वरु रहिची तमे मने पकिबा तो वसुधैव कुटुंबकम हमर जो कांसेप्ट थिला वसुधैव कुटुंबकम माने हमें एंटायर वसुधा को गोटे कुटुंब बोली कंसीडर करथु जदि गोटे आइडियोलॉजिकली देखिबे देन हम सनातन धर्म रे बहुत पूर्वरु जोटा कि सनातन धर्म को हमें कोन इंडिया रो माने वर्ल्ड रो एंशिएंट रिलीजन बोली कहौ सबुटु पुरातन धर्म ताले से धर्म भितर भी प्रथा हमर एई आइडियोलॉजी बहुत हमें एंटायर वसुधा को कुटुंब बोली कहउथलु बट ए जो प्रोसेस कहउछ हमें ग्लोबलाइजेशन ए प्रोसेस कोन करूची ना इट इज एमर्जिंग ए वर्ल्ड सोसाइटी गोटे विश्व समाज को सृष्टि करूची कारण हम कहितली सोसाइटी रो एग्जांपल कोन सोसाइटी मीनिंग कौन ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ ए पैटर्न इंटरैक्शन एंड ए पैटर्न रिलेशनशिप बट ए प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमर कोन होची हमें आज ग्लोबली समस्त सहित इंटरकनेक्ट करि पारुछु हमें ग्लोबली समस्त सहित इंटरैक्शन करि पारुछु तो जदि हमें देखिबा ठीक डीपली तले ग्लोबलाइजेशन इज अ फेनोमेना दैट इज रिजल्टिंग इन एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल सोसाइटी वर्ल्ड सोसाइटी गोटे विश्व समाज ये सृष्टि करूची नेक्स्ट स्लाइड इन कल्चरल स्टडीज the emphasis is on the development of cultural communication influencing the culture and identity of the groups across the nation. Coming to the domain of sociology, sociology it can be noted that the term globalization has got extensive treatment in the hands of many sociologists. बहुत प्रकार sociologists माने विभिन्न प्रकार कथा कहिसंती. The sociologists perceive that though economic in origin, the term has an enormous social implication. Though globalization is a concept, it has an economic origin. It has resulted from an economic point of view, but the social implications of globalization is much more than the economy. Next slide. So we will discuss certain definitions of it, sociological definitions of globalization. George Riger saying that globalization refers to the rapidly increasing worldwide integration and interdependence of society and culture. ये rapidly बढ़ुची कौन ना नेशन वाइज इंटरनेशनली ग्लोबल इंटरकनेक्शन इंटीग्रेशन वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन बढ़ुची इंटरडिपेंडेंसी लोक माने इंटरडिपेंड होचंती समस्त का प्रोसेस आज देख कोविड-19 आसिला आमे वैक्सीनेशन टू नै कि पीपीपी किट पई समस्त का ऊपर डिपेंडेंट हेलु अन्य कंट्रीज माने हम ऊपर डिपेंड हेले आमे डिपेंडेंट हेलु केमिति ना इट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन एंड इंटरडिपेंडेंस वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ग्लोबली एट द सेम टाइम societies and culture हमर कल्चर सब जिनसटा इंटरकनेक्ट होची तमे जो ड्रेस में इवन मु भी वर्तमान जो ड्रेस में ये भी वेस्टर्न कंपनी रो तो एई जो प्रोसेस हमें देखुछु सेही प्रोसेस रे हम समस्त को भीतर हमें जो गैजेट आज यूज करूछु जो थ्रो रे आज हम ऑनलाइन क्लास करूची इट हाउ इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ओनली बिकॉज़ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ए सब जिनस हम पाखरे से पहुंची जाई जन थ्रो रे हमें जिनसटा करि परछु देन Galt defines that globalization as a deterritorialization of the growth of supra-territorial relationship between people. Deterritorialization, supra-territorial relation माने कौन? ना every country has its own territory. सबु कंट्री रो गोटे टेरिटोरी थाई आ सेही टेरिटोरी भितर में समस्त कन्फाइंड हे कि थाउ बट कुह ग्लोबलाइजेशन थ्रू रे हमें समस्त हम टेरिटोरी और स्ट्रिक्ट टेरिटोरी हम टेरिटोरी अछि सत किंतु से स्ट्रिक्ट है कि नहीं हमें समस्त हम टेरिटोरी को हम बाउंड्री को क्रॉस करके जाके समस्त के सहित मिसुचो तो सेते पे से ताको बहुत बढ़िया क्लियर कहले ग्लोबलाइजेशन इज ए डिटेरिटोरियलाइजेशन दैट मींस इट टेरिटोरी को हम ब्रेक करूची डिटेरिटोरियलाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशनशिप सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशन द टेरिटोरी इट इज बियॉन्ड आवर टेरिटोरी ग्लोबलाइजेशन हम टेरिटोरी को बा हमर बाउंड्री को क्रॉस करके जते बडा में इंटरकनेक्ट करूची ग्लोबली लोक मान को याको में सुप्रा टेरिटोरियल रिलेशनशिप बोली कहूछु टू क्वोट अल्ब्रो ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स all those process by which the people of the world are incorporated into a single society that is the global society ये होची सही प्रोसेस जो प्रोसेस रे एंटायर ग्लोब रो लोक माने एंटायर वर्ल्ड रो लोक माने गोटे सिंगल सोसाइटी रे निजो को यूनिफाइड करचंती दिस प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड टुडे and now we will discuss a various characteristic of globalization we will discuss the characteristic part
कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक अच्छी कौन कौन सब फीचर्स अच्छी जहाँ को हमें ऑब्जर्व करके कि दिस प्रोसेस इज ए ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट वन borderless world borderless world माने every country has its own border my dear students India has its own border Sri Lanka has its own border Bangladesh has its own border Pakistan has its own border China has its own borders but at the same time we are going to China Pakistan people are coming to India at the same time we are going to European societies European products are coming to Indian societies so it is all about the borderless world though border is existing my dear students हम समस्तकर border अच्छी but that border is not maintaining strictly the border strictly maintain होनी कारण हम समस्त को interconnect करिचु हम समस्त को पाख को easily जाई परिबा अन्य लोक माने आसी परिबे this is all about the interconnection this is all about the interaction this is all about the integration of the people worldwide so the important characteristic of globalization is all about borderless world globalization as a process it is defining that a globe is a borderless हमरा border है restrict है कि नहीं हमें deterritorial relation through रे हमें गोटे nation रो cross करके आउटे nation को easily जाई परचो only because of this process then next slide liberalization my dear students मन रखो liberalization is the only process through which globalization is possible हमें ग्लोबली केमिति कनेक्ट होबा जदि गोटिए नेशन हमको पूरा स्ट्रिक्ट हमर जदि कंट्री रा रूल थिबो कि तमे तम बॉर्डर क्रॉस करके अन्य कंट्रीज को जाई परिबनी हमें केबे जाई परिबा ना अन्य कंट्री लोक आसी परिबे पसी परिबेनी केबे भी पॉसिबल हे परिबनी सो ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली विद इन द सिचुएशंस ऑफ लिबरलाइजेशन माने हला कोन उदारीकरण कोहलीकरण यार माने होची कोन हमें टिके रिलैक्स कर देजो हम बॉर्डर को रिलैक्स कर देजो हमर पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन को टिके रिलैक्सेशन अछि हां हमर केतेटा रूल अछि से रूल थ्रू में बिजनेस करि परबे इंटरनेशनली में बिजनेस करि परबे बट बहुत कम कोन से स्ट्रिक्ट और रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस नै so globalization is possible only within the situations of liberalization उदारीकरण बा कोहलीकरण ए सिचुएशन ए रूल नथिले हमें केबे भी ग्लोबलाइजेशन केबे भी कहि परिबनी so globalization can occur only under the situations of liberalization liberalization refers to the relaxing social economic policies which results in better integration of an economy with the global economy हमर एई प्रोसेस रे ही हमें ग्लोबल इकोनॉमी सहित इंटीग्रेट हे परबा सो लिबरलाइजेशन प्रोसेस थ्रू रे ही केवल ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हे परबो नेक्स्ट स्लाइड इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन इज ए यूनिवर्सल एमिति गोटिए भी सोसाइटी नहीं जे कि तमर आज ग्लोबलाइजेशन फ्री तमे आज गां कहबो कि सर गां गुडा को तो केबे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल गां रे तो लोक माने वेस्टर्न जिनिस यूज करनाती सेठी तो लोक माने बहुत ऑथेंटिक ताकर चाष बास करी खाउचंती तमर विभिन्न प्रकार वेस्टर्न जिनिस गां पाखरे नहीं तमे पिला माने आज गोटे सबुठु कोर ट्राइबल एरिया गोटे रिमोट एरिया भी जाई कि जाओ तमे सेई गां रो गोटे दुकान को पळेबो देखिबो पेप्सी कोका कोला थम्स अप स्प्राइट ए सब जिनिस थिबो how it is possible all those things are the foreign products Pepsi Coca Cola these are the foreign products how it is possible only because of the process of globalization तमरो गां भीतर को जे कि को तमे गां भीतर को जीवो से गां रे भी गोटे पिला जे फेसबुक खोली कि बसथिबो how it is possible only because of the process of globalization so globalization is a universal process my dear students it is an universal phenomena not a single society in contemporary society not in contemporary situation not a single society is free from the process of globalization it is a process it is universal in nature every society globalization is a process touches to every fringe of the society every fringe of the world corner world ro sabu corner re jai ki process pahunchi chi next slide globalization is both developmental and detrimental for the society globalization mo manna करनी globalization होची developmental कारण globalization थ्रो रे हमर आज कोविड-19 टाइम रे जदि देखिबा हम वैक्सीनेशन तो ने हम पाखरे आसी स्पुटनिक वी आसी के आगो पहुंची गला केमिति ना ग्लोबलाइजेशन कारण हम ग्लोबली डिपेंडेंट अछु ग्लोबली इंटरकनेक्ट हे कि अछु हम समस्त को ऊपर इंटरकनेक्ट हे कि अछु तो ग्लोबल जिंस गुडा हम पाखरे इजीली पहुंची जाउची हम आज हम पाखरे जदि हम इंडियन खाली देखिबा हम पाखरे जी विभिन्न प्रकार तमरा ओप्पो vivo mi redmi oneplus
एप्पल विभिन्न प्रकार फोन रो वेराइटी जदि आम खाली इंडिया ऊपर डिपेंडेंट हवा ताले हमर गोटे कि दी प्रकार वेराइटी था आज तुम पाखे मल्टीपल चॉइसेस अच्छी कहीं इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नो डाउट इट इज अ डेवलपमेंटल बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल हमर इकोनॉमिक जदि आज डेवलप होई पारे आम जदि आज वर्ल्ड रो सबुठ फास्टर डेवलपिंग इकोनॉमी होई पारु फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स बट इट इज बोथ डेवलपमेंटल एंड डेट्रीमेंटल यार डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी अच्छी डेट्रीमेंटल माने नेगेटिव इफेक्ट्स तमें देख आज आम ग्लोबलाइजेशन आसीगला आमको आज इजिली संगे संगे आमको जिनस मिल जाए रेडीमेड जिनस आउ आम कटेज द डिक्लाइनिंग ऑफ द कटेज इंडस्ट्री आज आम कटेज इंडस्ट्री को कहीं पचारुनु आज तुम कहीं धोती खदड़ ए लुगा कहीं पिंधु ना सो आमर जोटा ओरिजिनल जिनिस जोटा आमर नेचुरल आजिकल तुम गाँव को जीव गोटे गाँ भीतर को भी जीव इवन पुरी डिस्ट्रिक्ट जोटा कि बहुत नड़िया फेमस तुम जब पुरी डिस्ट्रिक्ट को भी जीव तुमको कहीं पैड़ पानी देवेनि तुमने आनिकी पेप्सी कोका कोला आनिकी देदेवे जार कि बहुत प्रकार नेगेटिव इफेक्ट्स अच्छी सो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस डेवलपमेंटल मना नहीं नो डाउट ग्लोबलाइजेशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट इज पॉसिबल बट दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच it has its detrimental effects too आज हमको भीतर कोविड-19 पैंडेमिक स्टार्ट होगला दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन चाइना रो वुहान रे से स्टार्ट हला बट देखो वर्ल्ड वाइड से स्प्रेड हे किया कर देला ग्लोबल पैंडेमिक थर्ड वेव पर गोटे वेव आज ट्रांसमिशन हे की चली केमिति हाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सो इट इज बोथ डेवलपमेंटल एज वेल एज डेट्रीमेंटल टू नेक्स्ट स्लाइड globalization is a irreversible process once the place is globalized once you have achieved the development you can't go back to the previous stage पिला माने आगरु आमे कोन करथुलु गछर बक्कळ पिंधि कि रहउथुलु हम पाखरे ड्रेसेस नथिला किंतु वर्तमान हम पाखरे ड्रेस अछि कोन आमे पुणी सेई जुग को फेर जाई परिबा इट इज इम्पॉसिबल आमे केबे भी सेई कंडीशन को फेरी परिबानी दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन इज irreversible process once the place is globalized once जदि गोटे थर से प्रोसेस टा हेई जाईची ऑलरेडी जदि गोटे जगह डेवलप्ड हो जाइए ग्लोबलाइजेशन हो सारी हमें केबे भी से बैकस्टेज को फेरी पारिबानी सो ग्लोबलाइजेशन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डिफ्यूजन डिफ्यूजन माने गोटे जगह तुम सपोज गोटे बोमाटा फुटई दब कौन हम तार लाइट टा चारियाड को स्प्रेड हो तार साउंड टा चारियाड को स्प्रेड हो एक्जाक्टली ग्लोबलाइजेशन इज लाइक दैट ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन यार मीनिंग हो प्रसारण ये प्रसार करे केमिति ना आइडियाज रो प्रसारण हुए तमरो कल्चर रो प्रसारण हुए तमरो इकोनॉमी रो प्रसारण होची यही प्रोसेस थ्रू आई डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज इज हैपनिंग only because of this process of globalization so globalization is the process it is because of its diffusion so globalization is a process it leads to diffusion of ideas diffusion of culture diffusion of technology diffusion of practices only because of this process of globalization next slide globalization is a multi-dimensional process already I have discussed about it that globalization is as a single process it is very single gotti hi process gotti word but it is describing multiplicity of phenomena ये मल्टीपल फैक्टर्स को डिफाइन करूची सो ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस यार डायमेंशंस गुडा बहुत प्रकार गोटे प्रोसेस बट देखो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखले पॉलिटिकली हमें केते इंटरडिपेंडेंट जदि आज हमें को गोटे इंटरनेशनल एजेंसी को जॉइन करिया को पड़िबो तले हमको बाकी कंट्री मानकर सहमति दरकार जदि हमको इंटरनेशनल हमर जदि को कंट्री से तो वार भी होची तले बाकी कंट्री माने हमर रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करिवे काहे कि ना बिकॉज़ ऑफ इट इज ए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कारण हमें समस्त ग्लोबलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन थ्रू रे हमें इंटरकनेक्ट हो जाइछु हमर वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन चली समस्त भीतर गोटे इंटरकनेक्शन प्रोसेस चली सो ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस political globalization is there economic globalization is there cultural globalization is there technological globalization is there so this is the globalization that's why globalization is a multi-dimensional process next slide now you will discuss the impacts of globalization देखो जदि हम impact देखिबा जति कि सारा you can see the picture the diagram here globalization केते प्रकार it is social in nature सोसाइटी ऊपर यार इंपैक्ट बहुत प्रकार अछि कल्चरल इंपैक्ट हमर बहुत प्रकार अछि इकोनॉमिक हमर इकोनॉमी ऊपर इंपैक्ट पकेछि पॉलिटिक्स ऊपर भी यार इंपैक्ट अछि टेक्नोलॉजिकल स्फीयर रे भी यार इंपैक्ट अछि तापर एनवायरनमेंट हमर एनवायरनमेंट ऊपर भी अछि सेथि पे म कहितली ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इट हैज अफेक्टेड
every fringe of the society. It is a single phenomena, but it has affected across the globe. Sabu prakar society, entire globe ko se affect karichi. So the impact of globalization is multi-dimensional in nature. The globalization is a multi-dimensional process. There are dimensions guda hoji multiple. The picture is defining that how globalization is a multi-dimensional process, how the impact of globalization is touched to every range of the society, every spheres of the society. So globalization has touches every spheres of the society. Next slide. But आमे एई सब क्राइटेरिया, नेक्स्ट स्लाइड, आमे एई सब क्राइटेरिया गुडा को तमरो दी प्रकार भितर देखिबा. इम्पैक्ट जदि आमे इम्पैक्ट को आमे एनालिसिस करबा ग्लोबलाइजेशन रो, आमे टू टाइप ऑफ इम्पैक्ट भितर देखिबा. It has a positive impact too, it has a negative impact too. Globalization both positive भी अच्छे, negative. मो कहितली globalization is a developmental as well as a detrimental too. यार डेवलपमेंट जदि ग्लोबलाइजेशन किछि डेवलपमेंट पे आनुची ताले ग्लोबलाइजेशन रो डेट्रिमेंटल इफेक्ट भी अछि, तार नेगेटिव इफेक्ट्स भी अछि. सो वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इनटू टू ब्रॉडर हेड्स, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट देखिबा पॉजिटिव. हमें टिके प्रथमे पॉजिटिव ऊपर फोकस पकेबा. कोन कोन पॉजिटिव इम्पैक्ट? एक्सेस टू ए लार्जर मार्केट. as only because of the process of globalization we can access to the global market. आज हमको choices जदि हमें देखिबा खाली इंडियन प्रोडक्ट्स देखिया को मिलिबनी. इट इज द access to a larger market. हमको larger market रो हमर गोटे यूनिवर्सिटी, बट से यूनिवर्सिटी रास्ते की विभिन्न प्रकार फॉरेन पिला भी पढ़ी पारुथिबे, खाली इंडियन पिला नथिबे. काहे कि ना ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन वी कैन एक्सेस अक्रॉस द ग्लोब. आज यदि तमे गोटे गैजेट, गोटे फोन टे किनिबो, गोटे लैपटॉप टे किनिबो, खाली तम पाखरे चॉइसेस रहबनी. आगरो हमर लैपटॉप कंपनी HCL थिला, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड. हम पाखरे गोटे ऑप्शन थिला, बट एबे जदि हमें देखिबा HP ठो ने की मैकबुक ठो ने की तमर डेल ठो ने की विभिन्न प्रकार लेनोवो बहुत प्रकार कंपनीज हम पाखरे अवेलेबल. काहे कि ना बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी कैन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. हम पाखरे बहुत प्रकार अवेलेबल अछि. हमर इंडियन फूड एबे तमे देखि पारो सब प्रकार जिनिस कोन ना संध्या बेले तुमको भल लागुनी, तुम कोन करिबो ना हम तो जिबा खाइबा को जिबार इच्छा होची, तुम कोन खाइबो? मैकडॉनल्ड्स, KFC, Domino's Pizza, all those things are the foreign brands and you are having your food. American burger, crispy chicken. How it is possible? Only because of this process of globalization you can access to the global market. Global products are available at our doorstep. हमर घर द्वार मुहरे सब ग्लोबलाइजेशन रो जिनिस, सब ग्लोबल प्रोडक्ट्स हम पाखरे अवेलेबल होची. सो वी कैन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट. दिस इज एन इंपोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट. प्रोवाइड्स चीपर गुड्स फॉर कंज्यूमर. आज हमें कोन करूचे? संबलपुरी गोटे साड़ी किनिबा को गला बेल को हम पाखरे 15,000 20,000 टका रेट पडुची. तमे मार्केट रो कम दाम रे बहुत जिनिस पाइछ. हमर ड्रेस जदि हमें खदी बा खदड़ जो आमर जोटा ओरिजिन आमर जो ट्रेडिशनल जिनिस जदि हमें से जिनिस ऊपर फोकस करबा तले हम पाखरे केबे भी से जिनिस अवेलेबल नाही, बट हम पाखे हम ताको एक्सेस करि पानु. रादर वी कैन buy all the foreign products at a cheaper price. So provide, it is only because of the process of globalization we can access to the cheaper products that is available in global sphere. Then leads to the better economies. As I have discussed, people, globalization is the integration of the nations across the globe. So from a economic point of view, it is all about the expansion of capitalism. So because of the process of globalization, the development of economy is possible. So it leads to the development of better economy. Then promotes world peace and security. A lot many international organizations are there that are working for the international peace, world peace. आज देखो वार चले से वार तक हमें केमती कंट्रोल करि परबा, केमती हमें इंटरनेशनली तमरो वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 पर ग्लोबल पीस ऊपर बेसी फोकस पहुंचला. तमरो आर्ट ऑफ लिविंग ठने की विभिन्न प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस में अछन जो माने की वर्ल्ड पीस प्रमोशन पई करूचंती. विभिन्न प्रकार पीस पई तमरो विभिन्न प्रकार पीस नोबेल प्राइजेस भी रही छि. काहे की ना ओनली टू स्प्रेड वर्ल्ड पीस. सो globalization promotes world peace and unity. Then innovation, because of the process of globalization, innovation is possible because we can access to the global market. So various innovative ideas we can access. हम पाखरे जो ideas अछि हमें फॉरेन बा अन्य कंट्रीज मान को पाखरु नुवा नुवा ideas हमें आनी परिबा. मु तुमको कहितली political point of view Indian constitution is known as the borrowed constitution. Why it is considered the borrowed constitution? Because we have borrowed the ideas from different constitutions of the different nations and incorporated into our constitution. So globalization leads to the innovation. Innovative ideas we can borrow from other countries. Innovative ideas we can collect from other countries. So
one of the positive impact of globalization is the innovation. Then better quality and variety. Now a large number of choices are available. मु कहतली जदि हम खाली कंप्यूटर कथा देखिबा इंडियन कंटेक्स्ट ताले हम पाखरे गोटे ऑप्शन थिला HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, बट नाउ वी कैन एक्सेस टू ए नंबर ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल एट अ वेरी मच चीपर प्राइसेस. सो बेटर क्वालिटी रे भी बेटर थाई पारे, वैराइटीज रे भी. सो मु कहूनी जेठी हमर इंडियन प्रोडक्ट्स क्वालिटी लेस पली, बट आमे गोटे ग्लोबल चॉइस हम पाखरे अछि, हम पाखरे गोटे ग्लोबल चॉइसेस अवेलेबल अछि, बहुत प्रकार चॉइसेस अछि. हमें सही चॉइस अकॉर्डिंगली हम प्राइस को कन्वीनियंट हिसाब रे विभिन्न प्रकार चॉइस प्रोडक्ट बा गुड्स को हमें चूज कर परबा. सो better quality and better variety is also another important positive impact of globalization. Then development of the transnational corporations. Globalization as a process refers to the deterritorialization and the development of supra-territorial relationship. So now we are not confined to our particular border only. Rather, we are integrated globally. The countries are integrated across the globe. So development of the trans. So whenever we are interacting at a global sphere, so one political party or one political organizations of a particular country can't confine to the entire globe. Rather, there are a lot many international organizations there. They are operating at a global level and they are controlling our global society, like World Bank, UNDP, UNICEF, International Trade Organization, World Trade Organization, IMF, International Monetary Fund, World Health Organization. A lot many transnational corporations are there. They are operating at a global level and they are controlling the entire global sphere. Next slide. Now we will discuss the negative impacts of the globalization. Globalization has both developmental and detrimental effects too. So now we will discuss the detrimental effects of globalization. First, causes environmental damages. Globalization as a process leads to the इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन. आज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे विभिन्न प्रकार इंडस्ट्रीज गुडा को हम एस्टाब्लिश करूछु, विभिन्न प्रकार मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस रे हमें अर्बन सेंट्रिक होछु समस्ते. ए प्रोसेस रे विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री गुडा एस्टाब्लिश होची, बहुत प्रकार नेचुरल सेटिंग बा जंगल गछ पत्र सब काटी के में विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस रे रोड कंस्ट्रक्शन ए सब रे डेवलपमेंट करूछु. ए प्रोसेस रे हमर एनवायरनमेंट डैमेज हे चली छी. हमें जत्ते प्रकार सब प्लास्टिक रो यूज करूछु, काहे हाउ इट इज पॉसिबल ना ओनली बिकॉज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम ऑन द प्रोसेस बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज लीड्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आसी मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में अर्बन ग्रोथ करूछु. ए प्रोसेस रे हमें नेचुरल एरिया को सब नष्ट कर सालुनी. ए प्रोसेस रे एनवायरनमेंट रो डैमेज होची. आज हमें कोन कहूछु ना हमें रेडीमेड जिनिस हमको दरकार, हमको नेचुरल ट्रेडिशनल से खदी से जिनिस हमको दरकार नहीं. हमें सब रेडीमेड जोटा फॉरेन अवेलेबल होची, विभिन्न प्रकार वेराइटीज ऑफ ड्रेसेस क्लॉथ्स हमें सब याकू यूज करूछु. हमें जानि न यार केते प्रकार नेगेटिव इंपैक्ट होची. हमको आज कंप्यूटर प्रिंटर्स या सब अवेलेबल थोड़े हजार हजार प्रिंट बाहर, बट सही चक्कर रे सही पेपर जो यूज होची सही प्रोसेस थोड़े केते केते बैम्बो गछ को कटा होची, केते गछ कटा होची हमें ताकू जानि पानु. So globalization it is all about the environmental. Because of globalization, environment is damaging. So this is the first negative impact. Then causes of the fluctuation of the prices. एबे जदि गोटे जगह रे वार स्टार्ट होची बा जदि गोटे प्रोसेस रे को कंट्रीज रे थर्ड वर्ल्ड वार बे स्टार्ट हेजबो, आम कंट्री रो प्राइस गुडा बढ़ी जिवो. आम प्राइसेस रे कारण वी आर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली. तमे देखो इंटरनेशनल मार्केट रे बिकॉज़ जदि में पेट्रोलियम ऊपर देखिबा हमर इंटरनेशनल मार्केट जदि किछि भी प्रॉब्लम हैला तले हम समस्त हमर चिंता बढ़ी जिवो कि हमर पेट्रोल रेट बढ़ी गला. कोविड-19 पैंडेमिक हैज अफेक्टेड द एंटायर ग्लोब, बट एट द सेम टाइम दी माने तमरो गुड और प्रोडक्ट सर्विसेस रे तमर केते सारा प्राइस हाइक हे गला. काहे ना it is because of the globalization, because we are interconnected globally from economic point of view, cultural point of view and the social point of view. So it has a fluctuation of the prices. So cross border terrorism. आज देखो तमरो अल कायदा ठने की विभिन्न प्रकार इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस माने जो माने कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाउछन. काहे कि बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस थ्रू रे में समझते आहुरी आसीबो हेल्थ क्राइसिस, एचआईवी एंड एड्स, इबोला, तमरो एबे रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक. देखो सेक्सुअली जेतेबेले हम समस्त इंटरकनेक्ट हेकि रहिछु, ए गोटे गोटे डिजीज जोटा कि गोटे गोटे कंट्रीज रे जन्म हला, ये सारी एंटायर वर्ल्ड को स्प्रेड करि छि. सो हेल्थ क्राइसिस ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जी हेल्थ क्राइसिस तमरो एंटायर ग्लोब सारा स्प्रेड कर सलानी. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. आज देखो बहुत सारा बहुत टाइम रे तुम न्यूज रे पढुतबो ट्रैफिकिंग होची. ह्यूमन लोक मान को चालान कर दिया होची, बाहर को पठे दिया होची. केमिति ना ओनली प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू में बाहर को फॉरेन को भी लोक मान को पठे दिया होची, चालान करा होची तांको. देन थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन.
state to national integration when we are interconnected globally, that means supra-territorial relationship, transnational corporations are operating at a global level and they are dominating the entire world. এই সময় কোন হচ্ছে না আমার ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি যে নেশন স্টেটর আমার ইম্পর্টান্স কমি কমি যাଉଛି আমি ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ସ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛୁ ଇଜିଲି ଆମେ ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇକି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିଜର ସିଟିଜନସିପ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟର ଯେତେ ସବୁ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो कि अन्य कंट्रीज गवर्नमेंट हो से आसिक इंटरफेयर कर इंटरनल अफेयर्स नेशनल इंटीग्रिटी आमर गोटे कंट्री रो इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी हार्म हो सो दीज आर द इंपोर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन थैंक यू